Good evening and welcome. Good Welcome evening. to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. I'm Shashi Dhar, your host, and I welcome all the participants and the guests for the session today. The agenda for the session today is in continuation with the last week. It is unmasking the ego. So this is part 2 of unmasking the ego. So let us have some people share what they got out of the participation from the last week session, so that who are coming here, new guests who are coming here today, or somebody who has missed out, can catch up, and then we will move forward on our discussion, right? So I will set the ball rolling by distinguishing what we had discussed in the last session. So we started off by first understanding what is ego, when it is formed, how it is formed, and the formative years when a child is growing up, and up to the age of maybe around 21, 18 to 21, when the ego takes the final shape, and that becomes a part of our personality. So we saw that. Yes. So ego, you can say, when we saw that, we said that ego is a false image of myself, which I create in a trying situation, a difficult situation, a challenging situation, which looks like a survival issue. That is when the ego gets generated. Correct? And we also saw the 3 stages of the ego formation. First stage, we said around age 5, which is 3 to 7 years, we can say. Then we picked up the second incident around 10 years. So it can be around, you can say, 10 to 12 years. Yes. And then we have the third stage of ego formation, which comes at the stage of around 17. So it can be around 15 to 19. Around 20, 21 can also be there, right? So basically 3 stages of formation of the ego that we looked at. So this is, I'm doing a quick recap so that we can catch up with what we had discussed, right? And we also saw that when these trying situations come, the child is speaking to himself. Of course, it is all part of social conditioning. What people say, he takes it, and then he says something to himself. So we're going to dwell more on that in today's topic. Unmasking the ego, we are going to go deep into it, and then we will see more into it. But let us first ask for some sharings. So जितने लोगों ने अटेंड किया था सेशन, काफी लोगों को अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए थे. You could trace out your ego, you did a lot of introspection. So let's have some more sharing during the week, what all opened up. Welcome, Amit ji. Namaskar. Good evening, everyone. Good evening. So during the session or during the week, what else could have opened up, so that you could see how your ego got formed and how you can get freedom if you can, be free from that clutches of the ego or the grasp of the ego. उसके अगर उसके क्या बोलते हैं, उसके शिकंजे से अगर आप निकल जाओ तो क्या कुछ पॉसिबल है आपकी लाइफ में. So we saw that, and we will also see different types of ego that human beings can have. Okay, so with this background, I'll throw the discussion open. Anybody who wants to share? And meanwhile, for the guests, let me just share that this will be put on. This session is recorded and it will be uploaded on the YouTube in the public domain. So it is entirely up to you whether you want to keep your video on and participate, or you could be on your video off mode and still participate. That is perfectly fine. Yes. So for the guest, I thought just a reminder. Yes. So now, who would like to share? Who would like to share? Who all had attended the last session and got some breakthroughs and want to share something? कुछ भी शेयर करना चाह रहे हैं, और पूरे वीक में भी आपके उथल पुथल चल रही होगी, हाँ, तो काफी कुछ आपके ईगो फॉर्मेशन के बारे में आप कुछ ने अगर आपने पता लगाया है, आप शेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड. Let me welcome who all have joined now. So Kaspi ji, welcome. Pushpa ji, welcome. And I hope my audio is clear. My internet is showing unstable. It will become stable in a couple of minutes. That's fine. Okay, so let's have some sharing. कौन शेयर करना चाहेंगे? Or if you have any questions from the last session, you are welcome. Yes. Sushil Jain ji, welcome. Pushpa ji, welcome. Yes. So we are ready to set the ball rolling.
कौन बोलना चाहेंगे? यस गुंजन जी, गो। काफी ट्रिगर्स हुए हैं। पहले तो लगता था कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी पूरी दुनिया गलत है। तो पता चलने लग गया है कि हम भी गलत हैं। ओके तो काफी काफी कुछ ओपन अप हुआ है इसमें। ओके, सो इफ यू वुड लाइक टू हाईलाइट व्हाट काइंड ऑफ ईगो वाज बॉदरिंग यू, ये राइट रॉन्ग वाला जो माय ईगो जजमेंटल, वाज लाइक ट्रस्ट इश्यू मेनली, व्हिच वन? जो सबसे ट्रस्ट इश्यू जो ट्रस्ट सबसे इश्यू, आगे ओके आया है। ओके, या ऑलराइट, जो सबसे आगे आया है मेरे। दैट मींस और एक शक शक करने की आदत। doubt. Okay, so डाउट। trust issues and doubt. Okay, so let me put it this way. During the ego formation stage, there was a particular situation, or there were set of situations which came up, and the child, and that time obviously you were a child, right? So the child decides, I cannot trust anybody. Or it could be something like, nobody is there to support me, so I cannot trust them. कि उसको जो सपोर्ट चाहिए होता है उस समय वो सपोर्ट नहीं मिला, तो he lost trust. And by the way, if that trust factor is with the parents, then as I said before, then the child is in real big pain, because for a child the parents are the gods. So the child will actually stop trusting God. So this is part of the preconditioning, but this is how the child will look at it. He doesn't think logically. You have to understand, a child of 5 years or 10 years who cannot think very, very logically. It is a very, very emotional kind of a decision that the child takes. So he will not say, my father doesn't care for me, or my mother doesn't care for me, or I cannot trust my father, or I cannot trust my mother. What he will say, I cannot trust people, or I cannot trust people in authority. तो उसको हर कोई जो अथॉरिटी में होगा, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो कोई भी हो, देयर विल बी ट्रस्ट इश्यूज. और किसी पे अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो उसी का छोटा भाई है, डिस्टेंट कजिन है, डाउट, यू स्टार्ट डाउटिंग पीपल. इसकी इंटेंशन क्या है? सिंस यू कैनॉट ट्रस्ट, व्हाट विल यू डू? यू विल डाउट देम. ये क्यों मेरे से ऐसे कह रहे? व्हाट इज एजेंडा बिहाइंड इट? इसका पर्सनल एजेंडा कुछ होगा. सो यू स्टार्ट डाउटिंग. सो डाउट एंड ट्रस्ट एक्चुअली गो टुगेदर. So this is how the ego formation takes place. Very, very good, Gunjan ji. That's a good analysis. Let's acknowledge Gunjan ji for that. Good. All right. Anybody else? Anybody else who would like to share? What is opening up? Maybe in the last session, maybe right now, if something is opening up, if you want to share. And I want experiential sharing from your life. ज्ञान देने के लिए तो मैं बैठा हूँ, है ना? तो आपको एक्सपीरियंशियल शेयरिंग करनी है, अपनी लाइफ से देखना है, अपने ईगो फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है. और मैं ये भी नहीं सुनना चाहता, पहले ही बता देता हूँ, कि मेरा कोई ईगो नहीं है. आपका ईगो है, पता लगाइए. आपने ढूंढा नहीं है. If you have crossed the age of 21, which I am sure everybody is here past 21, so you have an ego. Find out, and the mask that ego wears. Okay. So when you are in a troubled situation, in a distress situation, in a survival situation, a child feels threatened and unloved. और उस अनलव्ड को वो लोगों को नहीं दिखाना चाहता है, इसलिए वो मास्क पहनता है. Mask could be something like, which we discussed in the last session, I am intelligent, I am hardworking, I am very kind person, I am very helpful. These are the masks that a child develops to hide the ego of being unloved, being weak, being scared. वो दिखाना नहीं चाहता कि मैं scared हूँ, तो he will act confident. I am confident. So Right? basically, the child becomes attention seeker in any form. He could be attention seeker. He could be attention seeker. कितने लोग हैं जो पहले बीमार पड़ जाते हैं ताकि माँ बाप का प्यार ज्यादा मिले, ये भी होता है. हाँ है ना? जी. तो आप बीमार पड़ जाते हो कभी कभी अटेंशन लेने के लिए. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो छोटा विक्टिम ईगो का छोटा रूप है वो. व्हेन यू आर अ विक्टिम, यू वांट लॉट ऑफ सिंपैथी फ्रॉम पीपल. तो अपना रोना धोना करते रहोगे ताकि लोग सिंपैथाइज करते रहें आपके साथ. उनका प्यार, उनको, दैट इज हाउ दे ट्राई टू गेट लव, बिकॉज नॉर्मली दे वोंट गेट लव, दे आर वेरी क्लियर. हाँ, बिकॉज अनलव्ड है ना, तो नॉर्मल तरीके से तो प्यार मिलेगा नहीं. तो बीमार पड़ जाओ या रोना धोना शुरू कर दो तो लोग सिंपैथी करेंगे.
So that is a victim ego playing. You have to understand. And उसको unloved को छिपाने के लिए वो victim बन गया. That way he is getting the love from the people. You have to see the psychology behind how a child is surviving a tough situation. Okay. So everybody clear? Have everybody has got a sense of what the ego will talk? Yes. Anybody else who wants to share? कोई share करना चाह रहे हैं? Welcome. I wanted to, maybe I want to talk about 2 points quickly. One is that last time definitely it was a very profound understanding, or a different understanding for me, which I had not seen this way, that these 3 stages of ego formation, and I acknowledged also. But right now, as we're talking, what is opening up is that how, after understanding that this is the way it works and this is how it would have affected the personality or whatever traits that people have, or even I have, how do we now apply this information that I just got from you, for example? How do I apply so I can connect with any ego would have formed because of stage 1 or 2 or 3, but how can I apply it now? Yeah. Okay, very, very good question, Amiji. So let's acknowledge Amiji for that. So it's very important to know how do I see my ego right now? क्योंकि अभी तो मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, अभी तो I am powerful, I am strong, I can take decisions, I can think logically. A child was thinking emotionally, now I can think logically. So how do I distinguish the ego now, right? So and after distinguishing, how do I apply this new wisdom to do whatever is required? Yeah, correct. So the idea is, first you identify. Once you have identified it and the right understanding comes to you, the wisdom will dawn. Right understanding से wisdom आ जाएगी कैसे handle करना है. But the first thing is you have to identify the ego and the mask. If you can do that, then possibly the right understanding, with the right understanding right now, which is you're matured now with the logical thinking, you can find out a solution yourself. You will get that. Only thing is you have to first identify. So very good, Amiji. Good question. So how would I answer that is, you have to understand the ego once it is formed, maybe around 21 years. We can take that, right? Now, whatever happens after in life, after that, whatever is happening in your life, whenever the ego is triggered, it will just be a repetition. It will be a repetition of these beliefs, which will get strengthened one after the other, right? So whenever the child is saying, I cannot trust someone. So in any situation, if you have a doubt, or if you are having some thoughts like, how can I trust him? You need to understand, this is triggering the ego. Correct? तो आपको ईगो से ऑपरेट करना है, या दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? We will come to that. Okay. So या वहां से ऑपरेट करना है. अभी मैं उसको सस्पेंस में छोड़ रहा हूँ. We will discuss that immediately after this, right? So you have to understand what are the questions a child asks, and when later on you are asking the same questions, ego is bound to get triggered. तो आपका ego बाहर आ जाएगा, and that will come into the play. So the questions could be something like this. What does a child normally say? Something is wrong. 5 साल की उम्र में उसकी पिटाई हो गई, तो चाइल्ड क्या बोल रहा है? समथिंग इज रॉन्ग, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, सो समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग. मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरी पिटाई हो गई, राइट? या मैंने बहुत छोटी सी गलती करी थी, इतनी बुरी तरह मारने की जरूरत नहीं थी, बट मेरे को बहुत जोर से मार पड़ गई, सबके सामने बेइज्जती कर दी. तो ये सारे इंसिडेंसेस में चाइल्ड फील समथिंग इज रॉन्ग. सो व्हेनेवर यू आर फेसिंग अ सिचुएशन इन लाइफ राइट नाउ दैट समथिंग इज रॉन्ग, यू शुड इमीडिएटली गेट ए ट्रिगर कि ये ईगो को ट्रिगर करने वाला है. आपकी ये अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए, इससे ईगो ट्रिगर होगा, और वो ईगो फेयर बेस्ड डिसीजन ही लेगा, क्योंकि वो फेयर में है. टफ सिचुएशन आ गई है. करेक्ट? सो वन क्वेश्चन वुड बी समथिंग इज, सम स्टेटमेंट, नॉट क्वेश्चन. वन स्टेटमेंट कुड बी समथिंग इज रॉन्ग, राइट? समथिंग इज रॉन्ग, आई कैनॉट ट्रस्ट पीपल. मे बी बिजनेस में लॉस हो सकता है, या जॉब में कोई कन्फ्रंटेशन हो सकती है, whatever is happening in your life, maybe relationships, correct? Or maybe even a health issue. How can such a disease come to me? Something is definitely wrong. So वो ego को trigger करेगा, फिर वो, समझ रहे? दूसरा क्या है? When sense of belongingness is gone, child का sense of belongingness खत्म हो गया, which means what? I am not worth it. I am not worthy. I am not worthy to get the love from people around.
This is a very critical situation for a child. Even right now, when you feel that I am out of place, एक situation में जाके आपको लगता है मैं out of place हूँ, तो वहाँ sense of belongingness खत्म हो जाती है, आप disconnect हो जाते हो लोगों से. If you are getting disconnected from people, it is the ego at play. You can look at it that way. I'm just throwing a few questions, Amitji. One of that will click with you. I hope so. Right. And third होता है, जैसे फाइनल स्टेज पे अगर हम बात करें, थर्ड स्टेज पे क्या होता है, नॉर्मली चाइल्ड बोलता है आई एम ऑन माई ओन, मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला, अब जो कुछ करना है मैंने ही करना है. आई एम ऑन माई ओन. नाउ यू मे थिंक इट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट. इट इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इफ यू आर कनेक्टेड विद पीपल, पर यहाँ टोटल डिस्कनेक्शन के साथ बोल रहे हो. वो टोटल डिस्कनेक्शन के साथ बोल रहा है कि आई एम नॉट कनेक्टेड टू एनीबडी, सो नाउ मैं अकेला हूँ. लोनलीनेस की बात हो रही है. And he will lead an introvert life, loneliness. So that character could be living a very introvert life after that. I am on my own में. Confidence will be a mask. I am on my own में confidence भी आ सकता है, पर वो mask है, actual confidence नहीं है. Get my point? And ego का normal language क्या होता है? हाँ, इसको हम बोलते हैं WIIFM. ईगो का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा, ईगो का फेवरेट पेट डायलॉग है WIIFM. व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है. आई मी माई सेल्फ पे घूमेगा ना वो. तो जब भी आपका थॉट आ रहा है इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा प्रॉफिट कैसे होगा, मेरा फायदा कैसे होगा, आप ईगो की गिरफ्त में जा रहे हो. So Amit ji, I have thrown you a few statements. Yes, I think it has given me the direction and I will process it very good. I think I got the direction. Thank you. These are the ways how you can find out what are the triggers for the ego to happen. And let me also tell you, ego will always create separation. Ego will always create rivalry, comparison. है ना, वो छोटा है मैं बड़ा हूँ, या मैं छोटा हूँ वो बड़ा है, दोनों ईगो है. अब बोले कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, वो भी ईगो है. मेरे से मैं तो गया गुजरा हूँ, वो भी बहुत बड़ा ईगो है. Superiority complex and inferiority complex, correct? So we look at the ego types also, but I'm just giving you some you can say tips to find out when your ego is getting triggered and how it will get triggered. तो जब भी आप सेपरेशन की बात करें, मैं इंडियन, तुम चाइनीज, ईगो है. सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, ईगो है, ईगो के बेसिस पे काम कर रहे हो. करेक्ट? सो एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? यस, अनिरुद्ध जी, गो अहेड. सर, एक पॉइंट जो था, कई लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि मेरा कॉन्शियस लेवल S ज्यादा है, इसका S2 है, इसका S3 है, इसका S1 है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं. तो वो उनमें ईगो है क्या है? एक तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, और उसके बेसिस पे अगर कोई बायस बना रहा है कि मैं S6 हूँ, तू S5 है, हट, सामने से हट, पीछे हट, जैसे पहले होता था ना, कुछ अनटचेबल्स डिक्लेयर कर दिए जाते थे सोसाइटी में, उनको 1 किलोमीटर दूर से अलग हटना पड़ता था जो दूसरे लोग आते थे. तो अगर वैसा कंडीशन वैसी ट्रीटमेंट दे रहा है तो ईगो है, पक्का ईगो है. बट अगर सिर्फ क्लासिफिकेशन है, अब क्लासिफिकेशन में क्या है, जैसे आई एम ए मेल एंड गुंजन जी इज ए फीमेल, इसमें कोई ईगो नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है. सर, ये तो रियलिटी है मेल फीमेल की. मैं S1 S2 S3 की बात कर रहा हूँ. तो वो तो रियलिटी नहीं है. हाँ जी, उसमें भी हम देख सकते हैं ना, वो तो उसने अपने लिए रियलिटी पैदा कर दी है दूसरों को कंपेयर करके. तो कंपेयर कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया ना सर, कंपैरिजन इज ए रिजल्ट ऑफ द ईगो स्टेटमेंट ओनली. यस, कंपैरिजन अगर हो गया, मैं ये हूं तुम वो हो, सेपरेशन जहां क्रिएट हो रहा है, वो ईगो की डेफिनेशन ईगो है. बिकॉज एज पर डिवाइन ऑल आर इक्वल. तो जहां इक्वलिटी खत्म होती है वो छोड़ दीजिए, अभी वहां की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम ईगो की बात कर रहे हैं. तो अभी दूसरे की बात नहीं करेंगे, दूसरा मैंने अभी साइड में रखा है, अभी आ रहे हैं उस पर. नहीं, मैं ऑल आर इक्वल, तो वो जब इक्वलिटी छोड़ेंगे तो ईगो ही आएगी ना. जब भी सेपरेशन हो रहा है, जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने को औरों से, जब भी आई वर्सेस देम या आई वर्सेस यू आ जाएगा, वो ईगो है. या आई वर्सेस देम आ जाएगा तो भी ईगो है. मैं अलग हूं, बाकी लोग अलग हैं, तो वो ईगो आ जाएगा. ठीक है. तो S6 अलग है, बाकी S1 to S5 अलग हैं, तो वो ईगो है. करेक्ट? ठीक. वैसा बिल्कुल सही. लेट्स एक्नॉलेज अनिरुद्ध जी फॉर दैट. नॉर्मली अनिरुद्ध जी लास्ट में बोलते हैं, आज बीच में बोल दिया. वेरी गुड. ओके, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? कोई डाउट? यस, नमस्कार जी. हाँ जी, अशोक जी, और उसके बाद संजीव जी. या गो अहेड. जब अगर किसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो तो
ऑलरेडी लो लेवल पे उसको ईगो कहाँ ऊपर उठा रही है, वो ईगो कहाँ उसमें होगा? इंफीरियोरिटी तो कॉम्प्लेक्स भी ईगो है सर, विक्टिम ईगो में जाएगा वो, विक्टिम ईगो का छोटा भाई है मान लीजिए, उसी का ऑफशूट है। अच्छा, और ठीक विक्टिम है। अगर कोई होगा तो वो विलन को अट्रैक्ट करेगा लाइफ में, क्योंकि ईगो विल ऑलवेज फाइंड ए पार्टनर, है ना। तो अगर आप ओके। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं तो आप सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के एक बंदे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और वो आपके जो भी है, जैसे हम आमतौर पे बोलते हैं, बैंड बजा देगा, राइट। एक्सप्लॉइट तो करेगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, सफरिंग एंड मिजरी शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू वांटेड टू, you are operating from a victim ego, so obviously you will attract a villain in your life. That is how you need to look at it. Yeah, very good, Ashok ji. So Thank you. let's acknowledge Ashok ji for that. Yes, Sanjeev, you want to share something? Go ahead. I just wanted to add one of the live example for ego state for various reasons, may God reason, and that is OMG 2 मूवी अगर देखते हैं, उसमें प्रैक्टिकली उस बच्चे का या उसके फादर का या स्कूल मैनेजमेंट का या और जो लोग इन्वॉल्व हुए, सबकी ईगो स्टेट बड़ी क्लियरली डिफाइन होती है उसमें. You can learn that in a very simple manner. That's what I wanted to share. Obviously, so in a movie it will be highlighted in a big way. So you can easily catch that. Okay, ये victim ego में है तो ये जरूर विलेन को अट्रैक्ट करेगा, और वो करेगा, तो कोई ना कोई आ जाएगा उसको टीज करने के लिए, टॉन्ट करने के लिए, बुली करने के लिए, तो वो विलेन बन जाएंगे। जैसे उसमें उस केस में था कि एक बच्चा विक्टिम ईगो में था एंड कुछ सुना उसने किसी से, दिमाग में अपनी धारणाएं बना ली, और उसके बाद विलेंस आ गए उसकी लाइफ में उसको ड्रामा क्रिएट करने के लिए। सो इट इज देयर ऑलवेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, विलेन की जितनी गलती है उतनी विक्टिम की भी गलती है। Now don't take it very seriously as a real murder case or a rape case. I'm not talking of that. In general, we are talking normal situations in life. Correct? Yeah. We are not talking unlawful things or criminal things. वो तो अलग ही चीज है, उसकी डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं। Yes, Rajiv, you have raised your hand. Please go ahead. Yeah, I just wanted to ask about one type of ego wherein people, they say, okay, sir, the opposite person is not calling me, why I should call. So that will drift the relations, basically. It's a Yes. very normal thing, Yes, yes. which happens with many people. So I don't know जो how to overcome बात this. नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो ईगो को डिफाइन करते हैं ना। जो कोई बात नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है? साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, एंड साइलेंट ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी, it's a real torture for the other person. देखा है कभी? The wife gives a silent treatment and the husband is going all over the place. अरे क्या हुआ बताओ? नहीं बताना। तो दो दिन से साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, उसका हार्ट अटैक हो जाएगा नियरली। So or even it can be the other way around also, but most of the experiences are in my life have been that. The silent treatment coming from the partner is very very it can create a lot of suffering and misery for the other partner. एलूफ ईगो है ये। एलूफ ईगो का सिग्निफिकेंस क्या है आपको बता दूं। एलूफ ईगो मीन्स टोटली कोल्ड शोल्डर, है ना। तो आई डोंट केयर फॉर यू, डोंट टॉक टू मी काइंड ऑफ ए सीन। अब इसमें क्या होगा, whenever you are creating an aloof ego, you have to understand ये आता कैसे है। Something happens in life and you decide that you don't deserve love in life, yeah, you are not worthy of love in life, and that worked for you, that silent treatment worked for you। जब आप साइलेंट होते हो तो लोग बेचारे क्या हुआ टेंशन मिल रहा है ना, फिर नहीं मेरे को मत पूछो मेरे से, तुम नहीं समझोगे मुझे। नहीं मैं समझ जाऊंगा, तुम बताओ तो सही। नहीं तुम नहीं समझ सकते, छोड़ो, तुम्हारी बस की नहीं है, तो कुछ भी बोल देंगे ऐसे ही। एंड द अदर गाय इज एब्सोल्युटली क्रेजी, है ना। होता है ये, अटेंशन भी मिल रही है उनको, तो इस तरीके से एलूफ ईगो को सर्वाइवल उनको मतलब एनर्जी मिल जाती है, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, इट कैन किल अ रिलेशनशिप। सो यू टू अंडरस्टैंड, एलूफ ईगो के लिए उसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? एक कंप्लेनिंग पर्सन चाहिए, एक ब्लेमिंग पर्सन चाहिए। जब कोई बहुत ब्लेम करता है, बहुत क्रिटिसाइज करता है, बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, तब एलूफ ईगो ट्रिगर हो जाता है। देखा है, हैंडपेक्ड हस्बैंड, एलूफ ईगो, वाइफ इज गोइंग full blast and the husband is absolutely introverted, aloof, chupchap, silent. So that combination looks good, but then it is very very harmful for the relationship. Yes, so Rajiv, did I answer that? It is a tough ego.
and it is basically showing that I am not getting love. तो मुझे I need love. That is a message for an aloof ego. Yeah, I mean, it can be not only within the husband-wife relation, but also Anywhere. with friends or with हाँ, some other relations, sister बिल्कुल, हो, बिल्कुल। brother हो, जो भी है. कोई भी not और talking is in-laws a very हो. powerful weapon. Ignoring is a very powerful weapon. देखा है किसी ने, कोई इग्नोर करते दूसरा सर के बल खड़ा हो जाता है उसके लिए, वो पर इग्नोर कर रहे हैं, नहीं मेरे को बात ही नहीं करनी. नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि सामने वाला बात नहीं करता है, that is okay. I mean, they don't call from their side, but why we stop? You know, yeah, so it is a self ego. So it could be which comes in many between. things. It could be many things like attention seeking, wanting love, कि वो पीछे पड़े, प्यार करें, आके पूछें, हालचाल पूछें, पीछे पड़ जाएं, kind of a thing. So there are different reasons why it will happen, but you should understand that comes in the category of aloof ego, silent treatment. It is very, very destructive for a relationship. Okay, so we have discussed a lot of ego. We will come to the ego types later, but we should also parallelly see the opposite of ego. Yeah, so let us focus that also. So opposite when I'm saying understand this, it is like if ego is at 0, I'm talking of what is at 100. Okay, so it is not actually opposite. It is the other extreme or the other polarity of how a human being can operate. तो एक तो हमने देख लिया ego से operate कर सकते हैं, survival issues based in fear. What is the other polarity? The other extreme. One word for that, and we all know it by the way. What is that? ईगो का अदर पोलैरिटी क्या होगा? ऑपोजिट बोल लीजिए. ईगो 0 पे है तो 100% पे क्या होगा? हाँ जी, love. in the level of being. Yes, but you are right, love, but then it is in the form of being below. Being के basis पे क्या होगा? Either you can be operating from ego or you can be operating from Divine. oneness. ना, being नहीं है वो. being में बताओ. oneness. oneness नहीं सर. Okay. ये सब oneness love will come from that level of healing. नहीं वो तो Healing? प्रोसेस है, वो तो प्रोसेस है. Okay. Divine. डिवाइन को कैसे बोलेंगे? अब कोई डिवाइन तो नहीं बोलता ना, आई एम डिवाइन, तो वह हम चलो ठीक है वेदांता वाले बोल सकते हैं, बाकी लोग तो नहीं बोलते. यू आर ऑपरेटिंग आइदर फ्रॉम ईगो और यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम डैश, Soul. फिलिंग द ब्लैंक. Soul. सोल को कैसे बोलोगे? देखो, बॉडी माइंड एंड सोल तो हमारा कॉम्बिनेशन है ना, हम बॉडी माइंड एंड सोल ही हैं. आइदर वी कैन ऑपरेट फ्रॉम ईगो और वी कैन ऑपरेट फ्रॉम डैश. व्हाट इज दैट? थिंक. Divine soul wisdom. नहीं. Subconscious mind. आप अपने आप को क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? हम अपने आप को क्या बोलते हैं? किसी और को क्या बोलते हैं? माई. Humble. मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर उसके साथ चलो. व्हाट डू यू कॉल योरसेल्फ? माई. किसी और को क्या बोलते हैं? यूर सेल्फ. Myself. गॉट इट? तो ईगो का ऑपोजिट पोलैरिटी है सेल्फ, व्हिच इज रूटेड इन लव और डिवाइन. गेट मी पॉइंट? तो एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ सेल्फ के साथ कोई भी वर्ड बोलिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ लव, self realization, self actualization, self confidence, all this is operating from the level of self, right? So either you can operate from ego or you can operate from self. That self is based in love, rooted in divine, and that will be a bypass to the ego. How many of you can connect with what I'm trying to say? ईगो के अगर शिकंजे से बाहर निकलना है, आपको सेल्फ के लेवल पे ऑपरेट करना है. अब इसका ये मतलब नहीं है यू नीड टू डिस्ट्रॉय द ईगो एंड देन मूव टू सेल्फ. नो, दैट विल नेवर हैपन. जब तक आप जिंदा हो, इस बॉडी में हो, ईगो रहेगा. इट इज रिक्वायर्ड. अगर कुछ सामने शेर आ गया या हाथी आ गया, आपका ईगो बचाएगा आपको. वहां हम ब्रह्मास्मि नहीं बचाएगा, राइट? वहां सेल्फ नहीं बचाएगा. वहां फाइट एंड फ्लाइट में आपको भागना पड़ेगा. या हाथी से लड़ सकते हो तो लड़ लो, पर भागना ज्यादा अच्छा है अगर सामने हाथी है तो, है ना? तो वो ईगो चाहिए आपको. ईगो इज देयर टू मेक यू सर्वाइव.
ईगो इज ए, एज वी सॉ, ईगो इज व्हाट, इज ए क्रिएशन ऑफ द माइंड. माइंड के तीन एलिमेंट्स में, 4 एलिमेंट्स में से एक है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार. तो ये अहंकार है, अहंकार. So this ahankar or ego is important for you to survive. Correct? And you have to understand, I am the soul, so I am divine. But मेरे को अपने डिवाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए एक रॉन्ग इमेज क्रिएट कर लिया, और वो ईगो है. तो ईगो इज द फॉल्स इमेज दैट यू क्रिएट. व्हाई? फॉर सर्वाइवल इन अ टफ सिचुएशन. Get my point? So that is how the ego got operated. But now you don't have to operate from fear. You can operate from love. But uske liye you have to practice and start living from the level of self. Right? So you have to bypass the ego and operate from self. Now let me tell you how do you bypass the ego. Okay. मान लीजिए एक आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और एक बहुत कंजेस्टेड सिटी आती है. तो one option is to go through the city and face the chaos. Correct? Second is we take a bypass. लेते हैं कि नहीं? सब लोग लेते हैं, राइट? उससे क्या होता है? उस ट्रैफिक के chaos से बच जाते हो आप, सिटी के chaos से बच जाते हो, एंड यू बाईपास इट, एंड देन यू गो टू योर डेस्टिनेशन, यू रीच योर डेस्टिनेशन फास्टर. एग्जैक्टली द सेम. ईगो को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना होता, सिटी का बाईपास लेना होता है. डिटूर ले लिया, बाईपास ले लिया, एंड यू आर फ्री फ्रॉम दैट chaos. एग्जैक्टली द सेम. ईगो के सफरिंग से बचना है, ईगो की मिजरी से बचना है, ईगो के शिकंजे से बचना है, तो बाईपास लो और सेल्फ से ऑपरेट करना शुरू करो. तो ईगो को ऑपोजिट पोलैरिटी आई वुड से इज सेल्फ. some people call it identity and possibility. In some programs you can consider that also. You can consider that as fear and love. Ego is based in fear, self is based in love. You can consider it that way also. So am I making myself clear? How can you bypass the ego and operate from self? That needs practice. That needs a lot of practice, because you have to heal the ego and then bypass it. Otherwise you will get attached to it. अपने ईगो से अटैच होते हैं, बिल्कुल अटैच होते हैं. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कितने लोग अटैच्ड हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से? कितने लोग हैं जो अपने विकारों से अटैच्ड हैं? राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद. मद इज एक्चुअली द अहंकार. मद, मत्सर, राग, द्वेष, भय. So all these are vikars, gunas. तमस हैं, तामसिक और राजसिक गुनास हैं ये सब. तो यू गेट अटैच टू इट. इसको बाईपास करना इतना आसान नहीं है. यू नीड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल साधना, यू नीड लॉट ऑफ हीलिंग टू बी डन. We will talk of that. Healing the ego is a separate topic. We will deal with that maybe next time. But right now we are trying to identify the ego. Making sense? जो मैंने अभी बोला. How many of you can connect with it? Something opening up? Please share. What is opening up? कौन बोलना चाहेंगे? Yes, Anirudh ji, go ahead. सर ये मुझे थोड़ी क्लियरिटी नहीं हो रही है, या भी और इसको क्लियरिटी लेनी पड़ेगी कि सेल्फ जो है, अगर हम सेल्फ की बात करते हैं, सेल्फ के बारे में सोचते हैं, सेल्फ के बारे में बोलते हैं, तो वो ईगो नहीं है? ईगो को ऑपोजिट है सेल्फ. मैंने अभी वही तो बताया आपको. नहीं, मुझे लग रहा है कि वो ईगो है सेल्फ के बारे में बात करना, सेल्फ के बारे में सोचना. ये सेल्फ मतलब क्या बोल रहे हैं आप? सेल्फ में कौन आ रहा है? सेल्फ अपने बारे में सेल्फ. हाँ, तो अपने बारे में भी सेल्फ लव पहले करेंगे, अपने आप को लव से भरेंगे, तभी आप औरों को लव दे सकते हैं ना. आप किसी और को वो दे सकते हैं जो आपके पास नहीं है. आपके पास 1000 रुपए हैं, मैं आपसे 1 लाख रुपए मांगू, आप दे दोगे? नहीं है आपके पास, नहीं दे सकते ना. तो पहले अपने लिए तो आपको लव भरना पड़ेगा, तभी तो औरों को लव दोगे. जब आप अपने अंदर डिवाइन ढूंढ लोगे, तभी तो औरों को अंदर डिवाइन देखोगे. तो सेल्फ लव इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. सर इसमें बाईपास ईगो. ठीक है, आप ठीक कह रहे हो सर. अगर हम सेल्फ के अपने बारे में सोचेंगे, अपने लव करेंगे, इसका मतलब हम दूसरे से लव नहीं कर रहे हैं. पहले सेल्फ लव का कंसेप्ट समझिए सर. Unless you are filled with love, you cannot give love to others. Yes or no? ठीक है, okay. That's exactly what you mean by self.
तो सेल्फ लव का मतलब भी वही है। और सेल्फ में जब आप ऑपरेट करते हैं तो अपने वर्ड्स जो मैंने बताए सुने हुए हैं, सबने सुने हुए हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है। तो सेल्फ इज द डिवाइन पार्ट ऑफ यू, अंडरस्टैंड दैट। ये व्हाइट डॉग है, सेल्फ इज द व्हाइट डॉग, ईगो इज द ब्लैक डॉग। see that way. As a human being, I have two extremes to operate. ये दोनों मेरे अंदर ही हैं, दोनों एक्सट्रीम मेरे अंदर है। मैं किससे ऑपरेट करना चाहूँ मेरी चॉइस है। बट क्या हम एक्चुअली चॉइस समझते हैं उसे? नो, हम बंधे हुए हैं ईगो से ऑपरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही नहीं। 99% of the population doesn't have that option of operating from self. They are operating from ego by default. क्योंकि इतना उन्होंने स्वाध्याय किया ही नहीं है कि ईगो के बाईपास कर सकें। तो ईगो में ही रहते हैं, ईगो में ही जीते हैं, ईगो में ही मरते हैं। That's why so much of suffering and misery in life. That is why so much of war and hostility and anger and all this is happening. क्यों? क्योंकि सब ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। Unless we operate from self, unless you invoke the divine in you, there is no concept of Vasudhaiva Kutumbakam. There is no concept of universal brotherhood. There is no question of unity consciousness. There is no concept of oneness. I am making a very bold statement. Can I say something here? आ रहा हूँ सर, एक सेकंड आ रहा हूँ। पहले let the statement sink into people. How many of you can understand what I am trying to say first? ईगो से सेपरेशन क्रिएट होता है। यूनिटी कॉन्शियसनेस के लिए सेल्फ से ऑपरेट करना पड़ेगा। ईगो इज नॉट सेल्फ, ईगो इज वन एक्सट्रीम, सेल्फ इज अनदर एक्सट्रीम। लुक एट इट दैट वे। आप अपने अंदर डिवाइन को इन्वोक करके दूसरों के अंदर डिवाइन देखने की बात करते हो अनिरुद्ध जी। ये तभी पॉसिबल है जब आप सेल्फ से ऑपरेट करोगे, ईगो से ऑपरेट करके नहीं होगा। ईगो तो साफ बोलेगा मैं अलग हूँ एंड अमित जी अलग हैं। क्यों? मेरा शरीर अलग है, उनका शरीर अलग है, उनका घर अलग है, मेरा घर अलग है। जहाँ सेपरेशन हो रहा है वो ईगो है। बट सोल लेवल पे अगर मैं बात करूँ, मैं भी सोल हूँ, वो भी सोल है। वी आर ब्रदर्स नाउ। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए डिविनिटी को इन्वोक करना जरूरी है, सेल्फ से ऑपरेट करना जरूरी है, ईगो को बाईपास करना जरूरी है। दैट इज द लर्निंग आई वांट टू गिव। इज दैट ओके अनिरुद्ध जी? ठीक है सर। या टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग पकड़िए। करते अंडरस्टैंडिंग करते हैं। Good, very good. Just acknowledge Anuruddh ji for that. It's a very important question actually. A lot of people might be confused with that. Yes, Amit ji, you have raised your hand. Go ahead. Yeah, so I was saying that I think more than 50% people, grammatically, if you look at the larger trend, grammatically, I would say, self is considered as negative, and that's why probably we have words like selfish, selflessness. So, for example, probably what I would use a word here is higher self rather than just the self. So वो भी कर सकते हैं आप, ईगो और सेल्फ के लिए लोअर सेल्फ हायर सेल्फ कर लीजिए। So this is one thing that I wanted to be clear and मैंने कहा ना 0 और 100 की बात कर रहे हैं। 0 पे लोअर सेल्फ रख लीजिए, 100% पे हायर सेल्फ रख लीजिए, एक ही बात है। And then what will be the difference between self and divine as per सेल्फ एंड डिवाइन मेरे हिसाब से तो जो मैंने बोला है उस हिसाब से तो सेल्फ और डिवाइन एक ही है। हायर सेल्फ को ही मैं डिवाइन बोल रहा हूँ। डिवाइन सेल्फ लव, आपके टर्मिनोलॉजी में हायर सेल्फ ही डिवाइन है, लोअर सेल्फ ईगो है। करेक्ट। Because ironically or whatever, I think the trend today, more than 60% people grammatically think self is negative. सर लोगों को छोड़ दीजिए, ग्रामेटिकली छोड़ दीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ मींस लोअर सेल्फ इज ईगो, हायर सेल्फ इज डिवाइन। फुल स्टॉप। आप उस लाइकिंग से चलिए ना। And I think likewise, ego word also, I think largely is considered as absolutely a negative trait, but actually it's the very ईगो इज बेस्ड इन फेयर। नेगेटिव नहीं बोलूंगा, इट इज बेस्ड इन फेयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अहंकार। शास्त्रों में भी अहंकार ही बोला गया उसे। शास्त्रों में भी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ही बोला गया है उसे। तो अहंकार को ही ईगो बोलते हैं। ईगो इज रूटेड, आज वैसे भी लोअर चक्रास का ही, सोलर चक्र में ही मानते हैं उसे। अगर आप टेक्निकली भी बात करें, ईगो इज सेंटर्ड इन द सोलर चक्र। But this ego that we're discussing in this session is not necessarily ahankar. For example, it is ahankar only. Okay. अहंकार ही तो है ये। What happens to an infant, that stage 1 example, when he feels that he will not get the food and he cries, will that be a category of ahankar? वहां पे ईगो फॉर्म हो रहा है ना, पहला स्टेज है। Nobody loves me.
So, and there could be examples when ego is not necessarily ahankar. Id, is just the सर experience वही of. बात है, आप टेक्निकली जा रहे हो, बात सही है. Whenever you feel unloved, your ego will get triggered. Correct. Ego is the experience of समझने की oneself. बात है ना सर, टर्म्स पे मत जाइए, समझने की कोशिश कीजिए. Whenever a child or any adult feels unloved, his ego will get triggered, and then he will demand love. Yeah, that is ego. तब वो विलन भी बन सकता है, वो छीनने की कोशिश करेगा, वो भी जैसे रावण ने किया था. करेक्ट, ही वांटेड, मुझे चाहिए, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे को चाहिए, तो उठा के ले जाओ. तो क्या है, ये छीन रहे हैं, ईगो है. करेक्ट. So to understand, whenever somebody is feeling unloved, I will not get love the normal way, तो ईगो ट्रिगर होगा. फिर वो ईगो, कौन सा ईगो ट्रिगर हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट ही विल टेक द एक्शन. विक्टिम ईगो है तो रोएगा, देवदास बनेगा. विलन ईगो है तो वो फिर रंजीत या प्रेम चोपड़ा बनेगा या शक्ति कपूर बनेगा. करेक्ट. तो डिपेंड करता है ना कौन सा ईगो ट्रिगर हो रहा है, उसके हिसाब से एक्शन लेगा वो. पर अगर वो लव में आ गया, सेल्फ में आ गया, तो वो हीरो होगा. फिर वो हीरोइन बाग में गाना गाएंगे. राइट, गॉट दैट अमित जी? यस, थैंक यू. लेट्स एक्नॉलेज अमित जी फॉर दैट वेरी गुड डिस्टिंक्शन. यस अनिरुद्ध जी, गो अहेड. सर वही क्वेश्चन सर, हायर सेल्फ जो है, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं हायर सेल्फ हूँ, दूसरा लोअर सेल्फ है, तो वो ईगो नहीं सर आएगी? आपकी बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही. ईगो आपका है, डिवाइन आपका है. आप किससे ऑपरेट करेंगे, आप देखिए. नहीं सर, मैं हायर सेल्फ हूँ, तो जब मैं दूसरे से, अगर मैं हायर हूँ तो दूसरा लोअर है. नहीं, ये सभी ये हायर है. किसने कह दिया आपने? या तो हम मान के चले ऑल आर हायर आप सेल्फ. अगर ईगो में हैं तो आप नीचे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं. अगर आप हायर डिवाइन में आ गए तो सारे डिवाइन है ना. एक्चुअली तो सारे डिवाइन हैं. तो हाँ, यूनिवर्सल that's the point. ब्रदरहुड वहीं पे आएगा ना जब आप डिवाइन से ऑपरेट यस सर, करोगे. ऑल आर डिवाइन, ऑल आर डिवाइन. ठीक है, ओके. That's it. Very good. That's acknowledged. See, the ideas will come to you. You have to distinguish it. And terminology इसमें मत जाइए. Terminologies, हर नया ऑथर नई टर्मिनोलॉजी यूज करता है. कंसेप्ट को पकड़िए, अंडरस्टैंडिंग सही रखिए, टर्म्स कैन चेंज. राइट? Okay. Let's acknowledge everybody who shared. Let me ask, take some sharing from the new people. Parth, anything from your side? Baljinder ji, welcome. Shanti Raj Gopal ji, welcome. Jazz, welcome. Mani ji, welcome. Thank you. Thank you. Okay, good. Yes, who would like to share? Please go ahead. और कौन शेयर करना चाहेंगे? अशोक बख्शी जी, anything you would like to share? सुशील जैन जी, आपको शेयर करना चाह रहे थे. Sorry, I stopped you then. Please go ahead. In case you want to share something. नहीं, I just wanted to point out that ये सेल्फ का जो कंफ्यूजन हो रहा है वो यही है. उसको अंडरस्टैंडिंग आपने वैसे कभी क्लियर कर दिया है कि डिवाइन, एवरीबॉडी इज डिवाइन, सो ऑल आर इक्वल एंड वी आर जस्ट कॉलिंग as See, self. that is why ego is called the wrong image of yourself, because you are divine. If you experience yourself as divine, there is no problem. Yeah, self is actually truly what we are. Absolutely. And ego is something which is made up because Which is a false image, which is a false image, which is false created in image. case of a crisis, and you that is start based in living with fear. that image. And you Absolutely start right. living with that image. So, this is the Very thing. good. Absolutely right. है ना? तो कई प्रोग्राम्स में हमने अमित जी जानते हैं, संजीव भी जानते हैं ना. वी कॉल दैट आइडेंटिटी एंड पॉसिबिलिटी. करेक्ट. तो आइडेंटिटी ईगो है, पॉसिबिलिटी सेल्फ है, डिवाइन है. वो फियर है, वो लव है. यू हैव टू सी दैट. एंड यू डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जस्ट लेट इट बी. डिटूर लो, बाईपास लो, एंड सेल्फ में आ जाओ एंड स्टार्ट लिविंग फ्रॉम सेल्फ. इट नीड्स प्रैक्टिस, डेफिनेटली इट नीड्स प्रैक्टिस. क्योंकि आपने 25 साल से 30 साल से ईगो को इतना अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है that you are hell bent on proving that I am inferiority complex में हूँ, मैं superiority complex में हूँ. एक चीज बड़ी हेल्प करती है इसमें. if you understand what is your body and what is self, what are the What is your? what are the characteristics of self and the body. नहीं सर, वो उसमें मैं टेक्निकली या थ्योरेटिकली नहीं जाऊंगा, मैं लाइफ के एक्सपीरियंस से जाऊंगा. लेट पीपल शेयर देयर लाइफ एंड वी कैन पिक इट अप. या यू आर सेइंग राइट, but it will be more theoretical for people. I don't want to give any theory.
थ्योरी जितना देना था दे दिया, अभी आप अपनी लाइफ से ढूंढिए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। कितने लोगों को गिल्ट और ब्लेम में फंसे हुए हैं, कितने लोग गिल्ट और ब्लेम में फंसे हुए हैं। हाँ, मैं रोज 10 लोगों से बात करता हूँ ऐसे जो गिल्ट और ब्लेम में होते हैं। करेक्ट। तो ये क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज एन ईगो। आपको ब्लेम करने में बड़ा मजा आता है, चुगली करने में बड़ा मजा आता है। ये ब्लेम ईगो है ना, क्रिटिसाइजिंग ईगो है ना। लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उनकी गलतियां ढूंढ रहे हो, स्वाध्याय कहाँ कर रहे हो, पर अध्याय कर रहे हो। या खुद के लिए क्रिटिकल हो जाओगे गिल्ट ईगो में, कुछ भी करोगे फिर यू विल फील गिल्टी। किसी ने कुछ बोल दिया तो भी आप गिल्टी फील करते हो। तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आपने वो ईगो को पाल पोस के इतना बड़ा कर लिया है कि आपको उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। तो गिल्ट और ब्लेम को छोड़ो, इंसान हो, गलती होती है, आगे बढ़ो। फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स एंड मूव अहेड। मेकिंग सेंस? यस, कौन शेयर करना चाहेंगे? अनिरुद्ध जी, यस गो अहेड। सर इसमें जो हायर सेल्फ को यूनिवर्सल सेल्फ मान सकते हैं? सर जो मर्जी टर्म दीजिए, ओके सर। अपनी मर्जी से जो टर्म देना दीजिए, जितनी बुक यूनिवर्सल पढ़ेंगे सेल्फ, उतने टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। यूनिवर्सल सेल्फ का मेरा मतलब है यूनिवर्सल वंस यूनिवर्स। आई एम राइट? हाँ, ओके सर। जो बोलना है बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। टर्मिनोलॉजीज को मैं बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता, अंडरस्टैंडिंग को देता हूँ। ठीक है जी, राइट राइट। यस जैस, यू वांटेड टू शेयर समथिंग, गो अहेड। सर मुझे ऐसा लगता है जो ये सेशन से मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बार लाइफ में विक्टिम कार्ड प्ले किया है। फॉर एग्जांपल अगर कभी भी किसी भी जगह पे लाइफ में रिजेक्शन मिला है तो तुरंत वहाँ पे आई फील विक्टिमाइज्ड एंड आई डू दैट आई एम अनलव्ड एंड मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता सिंस आई थिंक सिंस चाइल्डहुड। तो अब प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गया है, बट अब करना ये है कि सोल्यूशन क्या है वो ढूंढना है यहाँ पर। अब वो सोल्यूशन ये है कि बजाय ये बोलने के कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, वहाँ चुप होके अपने मन में ये सोचो कि मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और शायद मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Absolutely, that is the right way. That's why we said self-love is the most important thing first. मैंने ये See, I'll बहुत tell किया you है a सर, very स्कूल में कॉलेज में लगातार मार्क्स कम करना आ गए है। तो आपने कई रिजेक्शन हो जन्मों गया। से, इस जन्म में भी 30-40 साल से आपने विक्टिम ईगो खेल चुके हो आप, है ना। तो सब मतलब बचपन में हम लोग सबसे ज्यादा खेलते थे। टिपिकल एग्जाम्पल होता है ना सर, वो स्कूल में होता है और वो सबका होता है। जब होमवर्क नहीं किया होता है और मैम से मार पड़ने वाली होती है ना, तो वो बहुत वहां पे हर कोई विक्टिम कार्ड प्ले करता है कि अब मार पड़ने वाली है तो मेरी तबीयत खराब थी, मम्मी ने नहीं करवाया, उस टाइप झूठ की बोलते चीजें हैं ना, सबने की होती झूठ बोलते हैं ना। है। हाँ, तो झूठ बोलना भी एक ईगो बन जाता है ना बाद में। जी कंपल्सिव लायर्स होते हैं। झूठ बाद में जरूरत नहीं होती झूठ बोलने की, फिर भी झूठ बोलते हैं, आदत पड़ गई है ना, वो पर्सनालिटी में जी आ गया। तो विक्टिम विल ऑलवेज ट्राई टू लाई एंड गेट अवे फ्रॉम गेटिंग पनिशमेंट। ये तो स्कूल से ही सीखा है हमने, ऑब्वियसली। हमारे टाइम में तो केन पड़ती थी बड़ी सॉलिड, और मुर्गा बनते थे, ऊपर से पीछे से लोग चौक भी मारते थे। मैडम का या सर का मुंह दर्द होता था, लोग चौक मारते थे। तो मुर्गा है कि मुर्गी, अंडा दे, यू नो। सो बहुत सारी चीजें होती थी, यू फील ह्यूमिलेटेड। एक तो क्लास में आके मुर्गा बना दिया, ऊपर से लोग चौक मार रहे हैं, यू नो। So there are a lot many things that you need to understand the child goes through, and he will pick up the kind of ego which is basically a wrong image of himself. फिर उसको छिपाने के लिए मास्क पहनते हो। तो अगर सही अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी that I am divine, then ना ईगो की तरफ से खेलोगे, ईगो की तरफ से खेलोगे नहीं तो मास्क अपने आप ही हट जाएगा। You need a mask only to hide something, ना। If I'm ugly, I need a mask to hide my ugliness. If I'm beautiful or if I'm handsome, why should I need a mask? आजकल ये टेलीफोन भी एक मास्क है, मोबाइल। Spending time on phone, on social media, it could be a way of escapism. Yeah, possible. My आई एग्री विद यू। my guru called me, तो मैंने कहा जी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो then he said honk, हॉर्न बजाओ। पकड़े गए। So that was the mask. I was unmasked. Yeah, but you need to unmask yourself rather than somebody finding you out. Exactly. उसके बाद से फिर I made it a point कि why to say lie, why to lie. So everybody has got it. Thank you, Ashok ji, for sharing that. Let's acknowledge Ashok ji for that. Okay, I'll take one more sharing from Path, and then I will give you some more
closing tips. Okay. Yes, Parth, go ahead. या सो लाइक जब से लास्ट सेशन हुआ है तब से थोड़ा थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है चीजों को सोचने के बारे में. सो एक रेगुलर अकरेंस जो मेरे साथ होती है वो ये है कि काफी बार सोशल इश्यूज को देखते हुए मेरे को लाइक गुस्सा आता है. लाइक हाउ कैन दे डू दिस. सो लाइक आई वाज कंटेम्पलेटिंग ऑन सम मैटर कि लाइक ये ओवर रिच लोग ऐसा क्यों करते हैं. आई मीन दे डोंट थिंक अबाउट इट एंड ऑल दैट. ठीक है. तो एक्चुअली मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन में गया, थोड़ा अपना इनवर्ट टर्न किया एंड आई वाज लाइक कि मैं कौन से एग्जांपल से रिलेट कर सकता हूँ जो चीजें मैं करता हूँ. ठीक है. एंड आई फेल्ट कि एग्जांपल आई ईट मीट. ठीक है. सो आई वाज लाइक यार जब जब तू ऑर्डर करता है, आई मीन व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट, लाइक नथिंग हैपेंस. लाइक आज मेरा मन कर रहा है नॉनवेज खाने का, चल बाहर चलते हैं खा के आते हैं. ठीक है. I don't think about the life and all that because it is available. Because I want it, I eat it and I don't think about it much other than the pleasure. है ना. So I was related to it कि हाँ अगर अगर मैं भी उस पोजीशन पे होता एंड मेरे अंदर इस लेवल का एक ईगो होता है, चीजें होती, तो या आई कुड हैव टेकन दोज एक्शंस विदाउट थिंकिंग बिकॉज मेरे को अच्छा लग रहा है. ठीक है. सो आई वुड नॉट से कि लाइक दिस इज लाइक समथिंग अल्टीमेट और समथिंग. आई वाज थिंक ये एक टूल जरूर है मेरे लिए टू कीप माई सेल्फ इन चेक. ठीक है. जैसे एक और एग्जांपल जिससे जो थोड़ा सा मैं रिलेट और कर पाता हूँ. जैसे जब मैं अपने एडोलेसेंट में और फुल लाइक अपने रेबुलस फेज की पीक पे था, एंड आई वाज लाइक कभी कभी मैं सोचता था यार यार मेरा बच्चा मेरे जैसा हो गया. आई कुड नॉट हैंडल इट. ठीक है. Yes. Good understanding. तो एक्चुअली उससे चीजें एकदम से सॉल्व नहीं हुई, बट कहीं ना कहीं इससे रिलेट हुआ कि यार एक पेरेंट्स के लिए एक रिस्पेक्ट जगी कि दैट दे आर आल्सो टॉलरेटिंग मी इन दिस फेज. ठीक है. आई नो आई एम डूइंग रॉन्ग एंड ऑल दैट बट दे आर टॉलरेटिंग मी एंड दे आर हैंडलिंग इट वेरी वेल. ठीक है. बट इट वाज अ स्टार्ट. अब जाके ठीक है ते 4-5 साल के बाद में धीरे धीरे करके अब आई हैव रीच दैट लेवल कि हाँ कहीं ना कहीं चीजें बहुत अच्छी हैं इस मामले में. Good. So that's a good insight. Good understanding. Yes. Anything else? Parth, anything else? नहीं सर. Okay, good. Let's acknowledge Parth. Very good. So that's a good way of understanding that parents need to be respected. Yeah, and they have done a lot for you. You should take care of that. Yes, very good. Let's acknowledge Parth for that. Yes, Gunjan ji, you wanted to share something. Go ahead, fast. सर जैसे मैं आइसोलेशन में रहती हूँ तो आई डोंट रियली मिंगल विद पीपल, ओनली ऑन फोन, दैट्स इट. नो सोशल गैदरिंग, नथिंग. दिस इज ओनली माय सोशल गैदरिंग ऑन Zoom. So this is also ego. Why that is ego? See, there are two things. First of all, आपने दो चीजें बोली. अकेले रहने में जरूरी नहीं है कि आप लोनली हो. अच्छा, हाँ जी, मैं लोनली नहीं फील करती. Hold on. Let me make a point clear first. Loneliness और solitude are two different things. Okay. अगर आप अकेले हो क्योंकि आप लोगों से नहीं मिल सकते या नहीं मिलना चाहते, वो ईगो है, वो आपका इंट्रोवर्ट नेचर है. करेक्ट. बट समटाइम्स यू आर एब्सोल्युटली इन सॉलिट्यूड. अकेले बैठ के यू आर ब्लिसफुल. यू आर कनेक्टेड टू एवरीबडी बट यू वांट टू बी अलोन. दैट इज फाइन. ये सॉलिट्यूड है. करेक्ट. लोनलीनेस है, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है, हाय मैं मर गया, मैं अकेला बेचारा. अब ये विक्टिम मोड आ गया. ये इंट्रोवर्ट नेचर है. ये लोनलीनेस है. ये ईगो है. बट सॉलिट्यूड, मोस्ट ऑफ द सेजेस लिव इन सॉलिट्यूड. सो व्हाट, दे आर एब्सोल्युटली ब्लिसफुल. मौन की शक्ति तो अभी, हाँ, संजीव को मैं अभी छेड़ नहीं रहा, वरना ये हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम विपासना. मौन की शक्ति क्या है? यू शुड नो. व्हेन यू आर साइलेंट यू आर सो पीसफुल, यू आर सो ब्लिसफुल. यू कैन ओनली बी ब्लिसफुल व्हेन यू आर साइलेंट. बाय द वे, बात करते समय ब्लिसफुल नहीं हो सकते आप. लोगों के साथ ब्लिसफुल नहीं हो सकते. लोगों के साथ तो एंजॉय कर सकते हो. यू कैन शेयर योर लव, पीस एंड जॉय विद देम. बट इफ यू रियली वांट टू बी ब्लिसफुल यू हैव टू लिव इन सॉलिट्यूड. ओके. तो understand with yourself in solitude. When you are absolutely comfortable with yourself, that is solitude. Yeah. And if you are feeling miserable that मैं अकेला हूँ, ये वो, then you are living in bad company ना. आपको अपनी कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए आप miserable हो रहे हो.
Loving yourself. You should love your company. अगर self love होगा, you will love your company. True. Yeah, very good, Gunjan ji. Good sharing. Okay, so I'll quickly tell you something, one punchline, and then we will close the session. So everybody has understood what is ego, the impact of living in the ego. We have seen that, and the power you can generate when you are operating from self-love. Yes. Okay. Now I'll tell you something. जब आप ईगो के, जैसे आप ईगो में हो और मास्क में जी रहे हो, फुलफिलमेंट मिसिंग है, ये तो आपको मालूम ही है. एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस. सफरिंग एंड मिजरी रहेगी, फुलफिलमेंट नहीं होगा, राइट. एंड गिल्ट एंड ब्लेम में रह रहे हो, या सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हो, देन कंप्लेनिंग या ब्लेम मोड में रह रहे हो, एलूफ ईगो में रह रहे हो. तो इन सब में क्या होता है, whenever your masks are not sufficient to save you from a situation, you will be in real crisis. So I'll tell you, if I have a tough situation, तो मेरा जो मास्क था, I am intelligent, I am a very friendly person, and I am an introvert, correct, or I am a very nice person. ये सब अगर जो मास्क है मेरे, ये अगर मेरे को उस सिचुएशन में काम नहीं आते हैं, my world crashes, total breakdown in life. And that's what happened actually in my life. So my masks were not sufficient to propel me forward in my life, and I had a major breakdown. That is when people suffer depression. तब वो hopelessness, helplessness, worthlessness वाली stage आ जाती है, and there is nothing to save you. So the ego crashes. तो जैसे हमारा विंडोज क्रैश होता है कंप्यूटर का, वैसे ही ईगो क्रैश हो जाएगा, and then it doesn't know how to survive. So you will end up in depression, total helplessness, hopelessness, worthlessness. And that is when people go to the extreme stage of depression and suicide attempt and whatnot. जब आपके मास्क आपको सिचुएशन से कोप करने में असमर्थ हो जाते हैं. Get that? So this is a food for thought. Think about this, and this will give you a lot of insights कि जब भी आपने लाइफ में कोई डिप्रेशन स्टेज पे आए हो या एकदम मरने वाली कतार पे खड़े हो, तो you should know your masks have failed you. So ego is not like, ईगो को सर्वाइव करने के लिए मास्क दिखाता है वो, लेकिन वो मास्क आपको हमेशा सक्सेस नहीं देते हैं. सक्सेस देते हैं तो आप खुश है, चलते रहते हैं, है ना, झूठ बोल के चल रहा है काम, बहुत बढ़िया. गिल्ट और ब्लेम में चुगली कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, सुपीरियरिटी में जी रहे हैं, इंफीरियरिटी में जी रहे हैं, राजा बन के जी रहे हैं या विक्टिम बन के जी रहे हैं. चल रही है लाइफ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ब्रेकडाउन आता है जब ये आपकी लाइफ को चला नहीं पाते. And that is when the breakdown happens in life. You get a heart attack, you get a paralytic stroke, whatever, something will happen in your life. Major breakdown होगा and total depression में जाओ. कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को, खुद को या औरों को, and then they go into the trap of suicide attempt or actual suicide. बहुत सारे suicides होते हैं, इसलिए होते हैं, they lose hope. अब भगवान भी नहीं बचा सकता हमको, तो ये ईगो का सिस्टम क्रैश है. Getting that? That is why it is important to get free from the clutches of the ego. That is the only path. Get yourself free from the clutches of ego, move towards self, and then live a fulfilled life. Fulfillment आपको self से ही मिलेगी, जब अपने अंदर के divine को invoke करेंगे तभी मिलेगी. So how to heal the ego so that you are free from the clutches and then move on the spiritual journey, this is what we are going to discuss in the next session, which will be healing the ego. Right? So we have unmasked the ego to the core. हमने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है ईगो का, कैसे फॉर्म होता है, पावर उसकी क्या है, कैसे उससे अटैच हो जाते हैं हम, और कैसे लाइफ में सफरिंग और मिजरी हम क्रिएट करते हैं. अब इससे फ्री कैसे होना है और हील कैसे करना है, ये हम सीखेंगे अगली बार. और कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो आपको फ्रीडम देंगे ईगो के स्टेट से बाहर निकलने के लिए, और उसको हम कैसे हील करेंगे और कैसे फ्री होंगे. This we will discuss in the next session, right? So we have just crossed the session, crossed the scheduled time. So I'll take some takeaways from people. No more ज्ञान, no more sharings, only the takeaway. क्या लेके जा रहे हैं आज के सेशन से? अंदर कुछ खलबली मची,
कुछ नई चीजें खुली. So let's have some takeaways in one line from anyone and everyone. मैं कुछ कहना चाहती हूँ. मेरा टेक Yes. अवे ये है कि आप हीलिंग वाला जो सेशन है वो इसी साल रख लीजिए ताकि अगले साल हम हील्ड होके जाएं. अगले New साल year will be में- the year of healing. Yay. Yes. Yes. So we will do the healing next. कोई भी दिक्कत नहीं है. Healing is a continuous process. Don't worry. अब कई जन्मों से आप ईगो में घूम रहे हैं, तो अब कई सालों तक और कई जन्मों तक आप हील्ड होके घूमेंगे. Okay. Right. So don't worry. So I understand your anxiety and your eagerness, rather, not anxiety, your eagerness to get healed and learn about the healing. And you're already in the Sunday program. So relax. Yeah. Right. And you've already won the prize also. Wow. Let's acknowledge Thank Jazz for the you. prize. Thank you. She won the first prize. Thank you, Gunjan ma'am. Yes. Thank you. Thank you. Congratulations. Yes. So Thank you. good. So everybody clear on the today's session? What is the takeaway? Let's have a quick takeaway and then we will close the session. Be honest and humble towards yourself and others. Be honest and humble से पहले सर, सबसे पहले तो अनमास्किंग द ईगो है. आपका ईगो क्या है, पहले आपको वो अनमास्क करना है. आज का सेशन सिर्फ यही था. अभी हमने हीलिंग की बात नहीं करी है. तो अनमास्किंग में क्या निकल के आया है वो बताइए. या तो आपने अपना ईगो देख लिया, अपना मास्क देख लिया, सब सही है, ये शेयर करिए, या कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर करिए. यस. हीलिंग का पार्ट तो हम अगली बार करेंगे ना. तो हीलिंग के बारे में नहीं पूछ रहा. ईगो कितने लोगों को पता लगा, तो यू कैन शेयर दैट. कौन कौन से आपके मास्क हैं वो पता लगा, तो यू कैन शेयर दैट. ओके, लाइक दैट. And meanwhile, let me just check. Sanjeev, you would like to add something today, or is that okay? All right. Okay. Yeah, that's fine. Yes. Thank you very much. That's perfectly taken care of. Great. So let's have some takeaways fast. Yes, Gunjan, go ahead. Sir, I'm taking that I am going to be selfish from today onwards. I'm going to think about myself first and then afterwards about somebody else. Selfish मत बोलो, उससे कुछ wrong message जाता है. Self love बोलो. Self-love. Fill I don't know yourself up why with people self-love. think that selfish is a wrong word, but I think selfish is a very good, General powerful word. understanding अगर किसी से Yes. पूछोगे तो selfish is not Yes. the right word to be used. You can take it understanding as self-love, which is much easier and much more acceptable to people. है ना? Actually, what Yeah. you mean is self-love. I know that. मैं इसीलिए Yeah. बोल रहा हूँ. So fill yourself up with self-love. So self-love is a very good takeaway for the session, by the way. No, I wanted to answer Amit that about selfish. Selfish is not being like, it's not a negative word. It's a very, very positive word. Nothing is negative or positive unless you make it so. Yeah. हाँ, तो टर्म्स के ऊपर मैं कभी भी नहीं जाता. इसीलिए पीछे हाँ जी. बोलते हैं ना, भावनाओं को समझो, भावनाओं को, है ना, शब्दों पे मत जाओ. तो भावनाओं के हिसाब से what you're talking is self-love, which is okay. Yeah. So fill yourself with self-love and spread and radiate love, peace and joy to everybody. That is the right way. And this, how we are going to do that, we will pick it up in the next session. Very good, Gunjan ji. Let's acknowledge Gunjan ji for that. All right, and Ashok ji also. Yes. Anybody else who want to share? Takeaway? Amit ji, takeaway? Yeah, I think the opposite of ego, I think that was new learning today. Last week's learning was anyways brand new. So very good. तो self and self-love. Self से जितने भी वर्ड बनते हैं ना, सिर्फ No, I would selfish like को to मैं continue to ब्रैकेट call में it डाल दूंगा. divine. करेक्ट. सेल्फिश को सर जैसे वो एग्जाम्पल, एक कहावत है ना, खाली बर्तन बहुत बचते हैं. तो हम सब शायद कहीं ना कहीं खाली हैं, इसलिए हमारी ईगो बचती है. तो हमको सबसे पहले सेल्फ फुलफिलमेंट करना है. सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए सेल्फ में जाना होगा, फिर फुलफिल होगे, है ना. जी. सेल्फ लव में भी पहले सेल्फ में जाओगे और फिर लव करो. दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. Operate from self and all these things will become possible. Self-confidence, self-respect, self-expression, self-realization. All this is self. You are realizing who you are. That is self-realization. So self can never be negative that way, right? Self is always positive. It denotes the divine in you. White dog. Basically, I sir, always refer it to as white dog. बेसिकली Yes. सर इस वाले सेशन का आउटकम है सेल्फ रियलाइजेशन. वो तो काफी आगे है, पर हाँ, सेल्फ लव पकड़ो तो भी ठीक है. हाँ? तो सेल्फ रेस्पेक्ट ले लो. ईगो को ऑपोजिट एक्चुअली में देखा जाए तो जो शिवानी जी भी बोलती हैं वो सेल्फ रेस्पेक्ट है. ऑपोजिट ऑफ और द अदर पोलैरिटी ऑफ ईगो इज कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट. करेक्ट.
All right, जी। very good. So thanks for everybody to share that. Anybody else who want to share? Take away क्या लेके जा रहे हैं? मेरे को एक लाइन में सुनना है सिर्फ. एक लाइन में क्या लेके जा रहे हैं? Take away from today. Zoom user, Zoom user कौन है? रंजना जी? Are you the Zoom user? Yes or no? सर Zoom यूजर मैं हूँ काशवी. Oh, आप Zoom user भी change हो गए हैं. Okay, that's fine. You need to write your name. That is better. Otherwise, I don't know who is in. Okay, let me ask the guest. Okay, thanks Kasvi for sharing that. And let's have some more people who have joined for today only. Okay, so Shanti ji, Shanti Rajgopal. Anything you would like to share? क्या लेके जा रहे हैं? What are you taking away from the session today? Shanti ji, are you there? Okay. सर आई लर्न समथिंग हाँ. जो मैं शेयर करना चाहूंगी. जैसे आपने बताया था कि लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड में डिफरेंस होता है कि जस्ट बिकॉज यू आर अलोन डजंट मीन कि यू आर लोनली. तो राइट नाउ आई एम इन अ सिचुएशन जिसमें मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में अकेले रह रही हूँ. तो इट रियली लाइक हेल्प्ड मी ये बात सुनने में. Very good, Kasi. Very good understanding. Yeah, I had earlier put a post also कि पहले मैं काफी अकेला था, अब मैं अकेला काफी हूँ, है ना? तो you go with that understanding. अकेला हूँ मतलब पहले मैं अकेला हूँ मतलब लोनलीनेस है. अब मैं अकेला काफी हूँ, that is solitude. अहम ब्रह्मास्मि. तब अहम ब्रह्मास्मि बोल सकते हो. When you are operating from self, you can say अहम ब्रह्मास्मि. It makes sense. Otherwise, it doesn't make sense. Operating from ego, you say अहम ब्रह्मास्मि. That is all rubbish. Yes. All right. Okay, let's acknowledge everybody. And we are already 9 minutes over time, so I will stop the session now. Thank you very much for your participation, and I hope everybody has taken the takeaway. Practice this. Find out your ego. Do introspection. स्वाध्याय करिए, अपना ego का form ढूंढिए, ego के mask ढूंढिए, and come ready to share in the next week, because next week we are going to see how you are going to heal these. How you are going to heal this ego, get freedom, and then operate from self, and then self-love will become a possibility. Is that okay with everybody? जी. Right? All right. Yes. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great week. Happy New Year to all of you. And then we come back in the next week with a lot of energy to heal our ego and live a life of possibility. Thank you. Aham Brahmasmi. Happy New Year. Brahmasmi. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Bye-bye. Bye bye. Bye. Bye, Guruji. Bye.